So students, today our new topic is the solitary reaper. प्रथमे देखिबा lead in. Okay. So the poet is William Wordsworth. Now lead in. A thing of beauty is a joy forever. The scenic view of a picturesque sight pleases our eyes. The hunting melody of a cuckoo soothes our soul. A soulful tone of a singer amuses our heart. The moment we take leave of this sight or sound, they occur to us recurringly in a flashback. We can hardly part with them. The voice and the vision have a long-lasting effect on us. They continue to be a perennial memory with us. They never cease to be. Have you ever experienced such charming beauty and music? You must have. Well, let's read the following poem to note how the music of a Scottish girl exercised an everlasting impact on the mind of the poet William Wordsworth. तेबे पिले वर्तमान ए लीडिन को आम बुझापी चेष्टा करवा जे एठारे कौन कहुई सौंदर्यर विषय सबुबले उपभोग्य आउ दृष्टि आकर्षण कला भली प्राकृतिक शोभा आमको दर्शनर सुख दिए आउ कोइलीर कुहू जो भाव में कोइलीर कुहू बा कोइलीर रागिणी आमको सामयिक शांति मध्य प्रदान करे हृदय गाउथिबा कौनसी गायकर गायन मध्य आम हृदय को आमोदित बा अम्यूज्ड बा एंटरटेन करे आउ एभली दृश्य बा स्वररू विच्छिन्न हो गला परे मध्य से सब बारंबार आम मनरे अंकित हेउथाय बा से सब को सहजरे पासरी हुए नाही कारण से सब कथा को पासरी जीवा बा भूली जीवा जहाँ आम हृदय को भल लगी थाए से सब कथा को पासरिबा एते सहज नुहे एवं स्वर आउ दृश्य पिक्चर और साउंड यार गोटे लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट प्रोफाउंड इम्पैक्ट आम आत्मा बा मन उपरे पड़ी थाए आउ से सब दीर्घस्थायी स्मृति होई आम सहित जड़ी रहे कारण से सब स्मृतिर केबे अपसारण हुए नाही तापर देखु कहछि हैव यू एवर एक्सपीरियंस अ चार्मिंग ब्यूटी एंड म्यूजिक यू मस्ट हैव एभली हृदय को मोहित कला भली सौंदर्य आउ संगीत कौन तुम केबे एक्सपीरियंस बा अनुभव करिछ कि यू मस्ट हैव तुम निश्चय करिथिबो लेट्स रीड द फॉलोइंग पोएम टू नोट हाउ द म्यूजिक ऑफ अ स्कॉटिश गर्ल स्कॉटलैंड रो जड़े पार्वत्य अंचल रे बास करुवा तरुणी अल्प वयस्का झील रो संगीतर प्रभाव पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ को ऊपर किभली गभीर छाप छाड़ी ताहा ऊपर होची ए कविता Behold her single in the field, yon solitary highland lash, reaping and singing by herself, stop here or gently pass. से कहते जे स्कॉटलैंड रो पार्वत्य अंचल रे गति करुवा समय रे कवि सेठाकर जनिका तरुणी शस्य काटुथिबार आउ गीत गाउथिबार देखुछंती सेठारे थिबा अन्य पथचारी माननकु एभली अपूर्व संगीत को उपभोग करने को से मत देउछंती स्टॉप हियर और जेंटली पास किंबा धीर स्थिर भाव में से झीटी को अतिक्रम कर कहउछंती कारण झीटीर काम आउ गायन रे सामान्य व्याघात सृष्टि हेउ यह कवि चाहि नाहंती सेकेंड स्टांजा को देखिबा Alone she cuts and binds the grain and sings a melancholy strain. Oh, listen, for the valley profound is overflowing with the sound. से तरुणी एकाकी शस्य काटुची आउ से सब शस्य को बांधुची से एक करुण संगीत बा सैड सॉन्ग गाउची जहाद्वारा संपूर्ण विस्तीर्ण उपत्यकाटी ये जो फ्लडेड ये संगीत जमी बन्या जल बन्या पानी द्वारा अंचल जमी बुड़ी जाए संपूर्ण विस्तीर्ण गभीर उपत्यकाटी जमी तार संगीत रूपक जल बन्या प्लावित होइछि No nightingale did ever chant more welcome notes to the weary bands of travelers in some saddy haunt among Arabian sands. नाइटिंगेल पक्षी जहाँकि आरब मरुभूमि रे देखा जाए एवं जो स्थान मानक मरुभूमि रे जल आउ किछि गछलता थाए
से स्थान मानक निहाती भाव में पथिक मैंने निजर श्रम लाघव करने विश्राम नियंती। तो नाइटिंगेल पक्षीर स्वर कौन संगीत ठारू कम नुहे, तेणु पक्षी को नहले कौन के गीत गाई पारे कि पक्षी जमी कोईलीर कुहू ता संगीत जी माधुर्य जी स्वीटनेस अच्छी से राब बा से स्वर से मधुरता थाए, तेणु पक्षी को गीत गाइबा सहित तुलना करा जायछि। तेबे जो स्थान मानक जल आउ किछि गछलता थाए सेठारे विश्राम नेउथुबा क्लांत पथिक मानकु नाइटिंगेल पक्षी तार सुमधुर स्वर द्वारा आमोदित करि थाए। किंतु पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ एठी मन होउछि जे नाइटिंगेल पक्षीर जो अंतरीण प्रतिभा जो निज संगीत माध्यम अन्य को आमोदित करिवार जो शक्ति जो सामर्थ्य वर्तमान ए शस्य क्षेत्र में जो झीटी संगीत गान करुच्ची यार कंठ बा यार संगीत नाइटिंगेल पक्षीर संगीत ठारू मध्य आहुरी माधुर्यपूर्ण आहुरी मधुर। अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वाज हर्ड इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द cuckoo bird breaking the silence of the siege among the farthest Hebrides. A voice so thrilling never was heard in springtime from the cuckoo bird. Again, cuckoo bird बा कोइलीर कंठस्वर सहित कोइलीर संगीत ठू मध्य अधिक रोमांचकर अधिक आनंददायक अधिक सुमधुर स्वर बोली से झीटीर गायन को तार जो करुणपूर्ण जो माधुर्यपूर्ण गायन तार गायन को कोइलीर कंठस्वर ठारू से आहुरी सुमधुर बोली तांकु मने हेउछि। कारण ए कुको बर्ड कौन ना ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज एमंग द फारदेस्ट हेब्रिडिस दूर रे थिबा समुद्र रे जो सब द्वीपपुंज गुड़िक रही जो जनशून्य स्थान सेठारे सबुबले नीरवता रही थाए से भली नीरवतापूर्ण स्थान गुड़िकर नीरवता को कोइलीर कंठस्वर मध्य भंग करिदेई पारे। तेणु से कहुई ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज एमंग द फारदेस्ट हेब्रिडिस। तेणु जो कोइली निजर कंठस्वर द्वारा समुद्रर दूर में थिबा द्वीपपुंज गुड़िकर नीरवता भंग करि थाए सेही कोइलीर कंठस्वर ठारू मध्य ए तरुणीर कंठस्वर तरुणीर गायन तांको अधिक रोमांचकर मन होइछि। तेणु कवि एठारे दुई गोटी पक्षी का सुमधुर स्वर बा सुमधुर कंठ ठारू झीर गायन बा झीर माधुर्य झीर संगीत आहुरी अधिक माधुर्यपूर्ण बोली तुलना करिसेंती। गोटे होउछि नाइटिंगेल बर्ड एंड अनदर इज द cuckoo bird. Will no one tell me what she sings? Perhaps the plaintive number flow for old unhappy far off things and battle long ago. तबे पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ झीटीर कथा को संगीतर भाषा समस्ते बुझी पारती संगीतर अर्थ हुए तो समस्ते बुझी न पारती किंतु संगीत एभली गोटे जिनस जहाँ समस्त को आनंद दिए। कोइलीर कुहुरे संगीत अच्छी पक्षीर काकली संगीत अच्छी शिशुर क्रंदन रे मध्य संगीत अच्छी। तेणु संगीतर भाषा समस्ते बुझी पारती संगीतर भाषा को समस्ते बुझी पारती। तेणु ये कहगला जे नो वन विल टेल मी व्हाट शी सिंग्स सो ही हैज बीन एंटरटेन्ड ही हैज बीन अम्यूज्ड बाय द सिंगिंग ऑफ द गर्ल किंतु से तार गाउथिबा संगीतर अर्थ से बुझी पारि नाहंती। तेणु से बाकी पथचारी मान को पचारुछंती मते केही बुझाई पारिबो कि मते केही कहि पारिबो कि जे झीटी कोन गाउछि से गाउथिबा प्रत्येक पदर अर्थ कौन। परहाप्स द प्लेंटिफ नंबर्स फ्लो। तेणु से अनुमान करिछंती बोध हुए झीटी कौन से एक मेलांचोली संगीत बा कौन से एक सैड सॉन्ग से गाउछि। फॉर ओल्ड अनहैप्पी एंड फार ऑफ थिंग्स बहु पुरातन कौन सी दुखद कौन सी करुण कथा कौन सी दुर्घटना ता जीवन रे घटी जे बहु पुरातन दुखद घटना किछि गाउछि एंड बैटल्स लॉन्ग एगो किंबा बहु वर्ष तले घटित होइतिबा कौन सी एक युद्ध आउ तार क्षयक्षति बा युद्धर जो दुखद परिणाम ताकू हुए तो मन पकई से गाउछि किंबा कौन सी पुराणा कथा कौन सी दुखद पुराणा कथा को मन पकई मध्य से गाउछि। तेणु एठी कवि अनुमान करुछंती कारण कवि सही झीर कथा को बुझा असमर्थ बा तार संगीत को बुझा असमर्थ।
or is it some more humble lay, familiar matter of today, some natural sorrow, loss or pain that has been and may be again? पुणी आउ थे से अनुमान करुँच कारण सेठारे कवि अपरिचित कवि को कहीं बुझेवाई नहांती एवं झीटी को अटकई सी गाउथुबा संगीतर माने बुझापी कवि पाखे समय ना बा से अवसर ना तेणु से नीरव भाव में झीटी को किछि न कही तार गायन में व्याघात सृष्टि नक कौन विदाउट एनी इंटरप्शन से बास से सुमधुर संगीत को श्रवण करुँच शुणुंट तेणु से कहते और इज इट सम मोर हम्बल ले बा यह हुए तो कौन साधारण संगीत होता पारे, फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे साधारण जीवन यात्रार नीतिदिनिया घटनार यह हुए तो कौन साधारण वर्णना, सम नेचुरल सरो लॉस और पेन बा होई पारे ये तो कौन प्राकृतिक दुर्विपाक किंबा क्षयक्षति बा कौन जंत्रणार संगीत हुए तो होई पारे, दैट हैज़ बीन एंड मे बी अगेन जहाँकि अतीत घटी जाइछि बा हुए तो आगकू एभली कौन प्राकृतिक दुर्विपाक बा क्षयक्षति बा जंत्रणार आकलन करी हुए तो झीटी गाउछि हुए तो ता जीवन में सब दुखद घटना घटी जाइछि बा जहाँकि आगकू घटी पारे। व्हाट एवर द थीम द मेडन सैंग as if her song could have no ending, से गाउथुबा संगीतर प्रभाव एभली भाव में रही संगीत समस्त हृदय को छुई पारे, संगीतर भाषा भारी व्यापक अल्प केतोटी शब्द को नहीं भी जदि संगीत रचना करा जाय थाए किंतु जितेबाला ताहा संगीत हो जाए तार अर्थ बहुत व्यापक हो जाए। एटारे से निरवच्छिन्न भाव में भारी स्वीट टोन like she has been singing and the poet has been listening to her plaintive plaintive notes plaintive numbers बा तार करुण संगीत को से शुणी लेवाकू लगी तेणु एठी तांको मने हेछि एठारे मेडेन है तरुणी अल्प बयसर झील तेणु से कहते जे झीटी जो संगीत गान करुच्ची तार कथावस्तु जहाँ भी होता पछे जो विषय वस्तु उपरे तार संगीत आधारित ताहा जहाँ भी होता पछे कवि की मन है सते जमीती ए संगीतर अंत नाही, झीटी जमीती गोटे इतिहास को गाउछि गोटे बहु पुरातन कथा गोटे असरंती गाथा गीत नुह तो ये गोटे असरंती गाथा भली तांको मने हेछि जोटा से लिखिछंती आज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग सते जमिति झीटीर गायन सेठी शेष होई पारु नथिला आहुरी से तार गायन बा तार संगीत आहुरी रहिथिला आहुरी किछि कथा और व्यथा बा आहुरी किछि गाथा जेमिति बाकी रहि जाउथिला। I saw her singing at her work and over the sickle bending एवं से देखिले जे झीटी तार काम क्षेत्र कर्म क्षेत्र में से शस्य काटुची आ बांधुची एवं सेठी कौन करुची आई सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क ता कर्म क्षेत्र में ही से गायन पूर्वक साइमल्टेनियसली से सिंगिंग एंड वर्किंग एंड ओवर द सिकल बेंडिंग एवं से सिकल होची गोटे प्रकार इट्स अ टाइप ऑफ वेपन टू कट द ग्रेन्स से तार दा बा जहाँ भी कहवा तार जो अस्त्र से शस्य काटुची ताकू नुआई बेंड करवा ताकू नुआई से शस्य काटिबारे व्यस्त अछि। आई लिसन मोशनलेस एंड स्टिल एंड आज आई माउंटेड अप द हिल द म्यूजिक इन माय हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वाज हर्ड नो मोर। कवि कहते जे से नीरव और निश्चल है झीटीर सुमधुर संगीत को उपभोग कले। आई लिसन मोशनलेस निश्चल विदाउट एनी मोशन मोशनलेस एंड स्टिल नीरव निश्चल है से झीटीर संगीत को उपभोग कले। एंड आज आई माउंटेड अप द हिल एवं तापरे से पर्वत उपर आड़ को झीटीर गायन सरीजा परे से पर्वत उपर आड़ को अग्रसर हेले। झीटीर संगीत तांको हृदय को बारंबार आंदोलित करुथिला। द म्यूजिक इन माय हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वाज हर्ड नो मोर। जदिओ से संगीत को से भली सुमधुर संगीत को से आउ पुनर्बार केबे शुणा सुजोग पाई नथिले। तेणु ये थिला
द सॉलिटरी रिपर पोएम रो ओडिया सारांश एबे देखिबा अबाउट द पोएट William Wordsworth was born on 7th April 1770 in Cockermouth in the Lake District, England. England रो Cockermouth बोली गोटे जगार से जन्मग्रहण करथिले. He was regarded as a worshipper of nature. से प्रकृतिर उपासक. Love of nature is a major theme of his poetry. सरल भाषा. He wrote about ordinary men and women in the language of the ordinary people. साधारण लोकंकर भाषा को बा कथा को साधारण जनजीवन भाषा रे बा साधारण जनजीवन कथा को से साधारण लोकंक भाषा रे ही लिखंती. फॉर हिम पोएट्री is the spontaneous overflow of powerful feelings arising from emotions recollected in tranquility. तेणु तांका मतरे काव्य होउची बलिष्ठ अनुभूतिर स्वत प्रवाह. स्वत माने ऑटोमेटिक. तांका मतरे काव्य होउची बलिष्ठ अनुभूतिर स्वत प्रवाह जहाँकि प्रशांत चित्तरे मन मध्यरे स्थानित भावनार जन्म नहीं थाए. प्रशांत चित्तरे आम जितेबाला कौनसी प्रोब्लेम आम भितर न थाए जितेबाला आम बहुत सहज अनुभव करूँ काम एंड क्वाइट आम फिल करूँ से समय प्रशांत चित्तरे मन मध्य जो भावना थाए से सब भावनार जन्म नहीं थाए. कौन ना ये हूँ कविता बा काव्य होउछि बलिष्ठ अनुभूतिर स्वत प्रवाह जहाँकि प्रशांत चित्तरे मन मध्य स्थानित भावना मध्यरु जन्म नहीं थाए. About the poem. In the present poem, The Solitary Reaper, Wordsworth depicts a solitary highland lash, a sweet song, and the profound effect of the song on him. जोटा मु कहि सारी जे से गोटे झियो सहित तांकर पार्वत्य उपत्यकार गोटे सेठाकार अधिवासी अल्प वयस्क तरुणी सहित तांकर देखा हेछि एवं से अदूर रे रही बा निकट रे रही झियोटीर संगीत को उपभोग करिसंती. ताको ता गायन रे व्याघात सृष्टि न होबा पई अन्य मानको मध्य परामर्श दैछंती. आ से संगीतर जो माधुर्य जो स्वीटनेस ता तांको हृदय रे सबुदिन पई रहिबो बोली से आशा रखिछंती एवं से भली संगीत से आउ केबे सुनिबा को पाई नाहंती पुनर्बार. तेणु से कथाटी कहगला हर स्वीट सॉन्ग एंड प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द सॉन्ग ऑन हिम जो गभीर मानसिक चाप मानसिक प्रभाव तांको ऊपर पड़िछि से सही कथा को वर्णना करिछंती. तो ये देखा ग्लोसरी एंड नोट्स रे जो सब डिफिकल्ट वर्ड रहा बिहोल्ड लाइक टू लुक और सी समबडी और समथिंग. यॉन माने ओवर देयर सेठारे सॉलिटरी सिंगल और अलोन. हाईलैंड लैश अ गर्ल हु लिव्स इन द हाईलैंड्स और माउंटेन रीजन्स ऑफ द स्कॉटलैंड. स्कॉटलैंड देशर पार्वत्य उपत्यका अंचल में बसवास करुवा झील मानू बा तरुणी मानू हाईलैंड लैश बोली कह जाए. मेलनचली स्ट्रेन बा सैड सॉन्ग. वेल लिखाई जार मान हूँ भैले बा उपत्यका. प्रोफाउंड डीप हैविंग और कम विथ अ ग्रेट डेप्थ. चॉन्ट बा चैंट बा सिंग. वेरी वेरी टायर्ड आफ्टर वर्किंग हार्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम. बैंड अ ग्रुप ऑफ पीपल. हॉन्ट अ प्लेस विजिटेड फ्रिक्वेंटली. सैडी हॉन्ट आम जोटा कहते आरब मरुभूमि रे किसी स्थान में जल आउ गछलता जो था से जगह को कहुए. अरेबियन सैंड्स द डिजेट ऑफ एरबिया. देन फारदेस्ट हेब्रिडीज द मोस्ट रिमोट ग्रुप ऑफ आइलैंड दैट लाइज इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड. प्लेंटिफ नंबर्स माने सैड म्यूजिक. हम्बल ऑर्डिनरी सॉन्ग. सिकल अ टूल फॉर कटिंग ग्रास और पैडी. धान बा घास काटापी एक टूल जहाँ व्यवहार करा जाए. मोशनलेस विदाउट मूवमेंट. स्कॉटलैंड अ कंट्री व्हिच इज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम. ओके सो बर्तमान आम देखा लेट्स अंडरस्टैंड द पोएम. तो किसी क्वेश्चंस भी ये अच्छी तेणु गोटे अति छोट कविता तेणु आम ए सबू ना भी वी शैल डिस्कस सम क्वेश्चंस. सो what is the central idea of the poem? What is the central idea of the poem? Now see, what is the central idea of the poem? Take the correct answer. Reapers can sing like birds. Sweet music appeals to all. Beautiful experiences have long-lasting effects, and rich harvest makes the reaper happy. So the correct one is
Sweet music appeals to all. The setting of the poem is which one? Arabian deserts, the British Isles, the Hebrides Islands, the mountain regions of Scotland. कही आरंभ जे स्कटलैंड पार्वत्य उपत्यका बा पार्वत्य अंचल ये तरुणी को नहीं ये संपूर्ण कविताटी पर्यवेसित. सो द आंसर इज द माउंटेन रीजन्स ऑफ स्कॉटलैंड. Who are the people described in the poem? The poet and the solitary reaper. These are the people who are or who have been described in the poem. Who does the expression highland lass refer to? Why does he describe her as yon solitary highland lass? Here highland lass refers to the solitary reaper when the poet saw in the valley, because the girl was alone over there and he knew that this mountain region is the native place of the girl. Okay, then the fifth one, what is the girl doing? The girl is cutting and binding the grains, and simultaneously she is singing. Then the sixth one, who does the poet say stop here or gently pass, and why does he say so? क्या को कहउछंती तुमे यार संगीत को सुनो उपभोग करो किंबा नीरव रे ताकू डिस्टर्ब न करी ताकू इंटरप्ट न करी नीरव रे तुमे चली जाओ. क्या कहउछंती टू द पासर्स बाय, अन्य पथचारी से रास्ता दे से झीटी को अतिक्रम कर जो मैंने जाऊँच टू द पासर बाय, बिकॉज ही वांटेड टू लिसन द मेलोडियस सॉन्ग ऑफ द गर्ल विदाउट एनी इंटरप्शन. 7. Pick out the words which tell that the girl doesn't have anyone by her side. Karan, so what are the words the poet has used to show that the girl was alone? These are the words like solitary, single and alone. The poet has used these words to show that there was no one along the side of the girl. What is the tone of her song? Happy, sad, soothing or sympathetic? It was soothing. Overflowing with sound. आपको एक्सप्लेन करिबा. So the young girl singing in a loud voice and the entire valley is flooded with her beautiful voice. Okay, the young girl singing in a loud voice, in a clear voice, and the entire valley is flooded with her beautiful voice. ओके, ता भयस रे संपूर्ण पार्वत्य उपत्यकाटी जमिति बन्या प्लावित हेला भली मन हेउछि. एटी संगीत रे बुड़ी गला भली बन्या प्लावित हुए, संगीत रे संगीत प्लावित हुए बा तार जो सुमधुर संगीत जो करुण संगीत हेले मध्य हृदय स्पर्शी. सब बेले करुण संगीत भी मधुर हो पारिबो केमिति जदि ता हृदय स्पर्शी हो पारे. ओके, the solitary reaper's song reminds the poet of other singers. Who are they? आउ दी जन सिंगर से दी जन सिंगर होउछन्ते दी जन पक्षी. सो वन इज नाइटिंगेल एंड अदर इज cuckoo. Who sings welcome notes? Where, for whom, what for? ओके, किए वेलकम नोट्स बा तांको आनंद प्रदानकारी संगीत गान करे केउठारे कहा पई आ कोन पई. So the nightingale sings welcome notes or the pleasant notes in the shady places among the Arabian sands for the tired travelers to welcome and soothe them. Then whose voice is thrilling? The voice of cuckoo bird. The voice of cuckoo bird is thrilling. So एमती पिले there are lot of questions up to 26. So exactly if you read the poem with complete focus,
then you can get the answer of each questions. It's max to max 2 to 3 lines. The answer of each question is max to max 2 to 3 lines. So this task is yours. This is a very simple poem, and even you have the meaning of the difficult words. So go through the difficult words and find out. So try to write within 2 to 3 sentences or lines. Ebe dekhiba the H block. Let's appreciate the poem. H block re dekho kon lekha achi. The H block. Describe what picture on the valley and farm worker comes to your mind as you read the poem. जे से जो उपत्यकार से जो शस्य क्षेत्र रे जो लोक माने काम करूछंती से को चित्र से मानकर को चित्र तुम मन को आसुची. So on the valley your young lady is at a cornfield. It comes to our mind, and she is quite alone. Se ekutia achi. That's why name of the poem is The Solitary Reaper. She is cutting and binding the corns, and simultaneously she is singing. एतिक दृश्य आम आखि सामने को आसुची. The entire valley seems to be flooded with her amusing song. संपूर्ण उपत्यकाटी जेमिति तार सुमधुर संगीत रे संगीत प्लावित हैला भली मने हेउची. Why do you think Wordsworth has chosen the song of the nightingale and cuckoo for comparison with the solitary reaper's song? जे ए दुई पक्षी को कहीं कवि बाछिछंती कंपेयर करबा पाई. से जो शस्य कटाली तरुणी रो संगीत सहित नाइटिंगेल आउ कुको बर्ड रो संगीत को से कहीं तुलना करछंती. द आंसर वुड बी लाइक द पोएट फाउंड द गर्ल्स सॉन्ग मोर मेलोडियस. आमे सब बेले गोटे जिनस को जदि आउ गोटे जिनसर समकक्ष पाऊ, इफ यू फाइंड समथिंग व्हिच इज ऑफ सेम लेवल, then we compare, equivalent. So the poet found the girl song more melodious than the nightingale and cuckoo, and her song mesmerized him. आउ तार संगीत तांको mesmerized करिछि, अभिभूत करिछि. Whose song is sweeter according to the poet, the nightingale, the cuckoos, or the solitary reapers? So no doubt the solitary reaper's song is sweeter according to the poet. So ebe dekhiba I block. The poet cannot understand the words of the song, yet he raised several possibilities about its theme. In the diagram below are some of the possibilities. Read the stanzas 5 and 6 and find out the phrases that match each. Work in pairs and complete the diagram, writing the correct phrases in the blanks. One is done for you. Okay. तेणु जेते से बहुत गुड़े कल्पना करिसंती जे सॉलिटरी रिपर एक्जाक्टली गाउची कौन, यह कौन साधारण जीवनर संगीत ना, यह कौन अतीतर घटना दुर्घटना ना, यह कौन गोटे दुखदायक युद्धर कौन वर्णना, से बहुत गुड़े परिकल्पना करिसंती. तो ये क्वेश्चन रे देखा देखिछि व्हाट इज द थीम ऑफ द सॉलिटरी रिपर्स सॉन्ग. ओके, तेणु आमको कौन करिया पड़िबो ना, फाइंड आउट द फ्रेजेस दैट मैच ईच. देखो लिखिछि everyday routine events. Okay, I'm writing here the I block. Everyday routine events. An important historical event. An important historical event. A disaster or calamity in the past. A disaster or calamity in the past.
about a death or illness of a loved one. Death or illness of a loved one. Okay, so what the question is all about, we need to find out the appropriate phrases from the poem so that which suits these phrases, these sentences. कौन गोटे लिखी एवरीडे रूटीन इवेंट्स जमी कहती इट्स अ humble lay or this was some naturals, familiar matter of today, so this was the familiar matter. An important historical event, गोटे गुरुत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना कौन ये से युद्ध विषय कही हुए तो कौन गोटे दुखदायक युद्ध कथा भाविकी हुए तो झीटी से उपलक्षे गीत गाँची तेणु बैटल्स लॉन्ग एगो A disaster or calamity in the past, अतीत घटी जाइथिबा कोनोसी क्षय क्षति बा दुर्विपाकर कथा. Natural sorrow, loss or pain, एई सबु फ्रेजेस गुडा को हम पोएम रे अछि. Natural sorrow, loss or pain. Then death or illness of a loved one. तापे कौन लिखाई ना ओल्ड, अनहैप्पी और फार ऑफ थिंग्स. So this phrase suits this one, death, illness of or a loved one or loss or pain. ये जो word टा अच्छी loss or pain, loss or pain, क्षति बा जंत्रणा. ए जिनसटा मध्य कौनसी प्रिय परिजनकर मृत्यु बा तांकर रुग्ण अवस्था को मध्य सूचौछि कोटा लॉस और पेन. सो दीज आर द phrases that suits these sentences. मझिरे कौन लिखा था, what is the theme of solitary rapper song? This was the theme. Okay, then we'll see the second questions. So let me clean this. In stanza 3 and 4, the poet compares the solitary reaper's song with that of the nightingale and cuckoo. On the basis of your reading of the poem and your imagination, complete the table below and required information or facts. Work in group of 4. Then check your findings with others. A brief discussion. Okay, so पिले ये गोटे कथा देखो जे he has compared many things or he has got a connection with many objects. जेमिति कि देखो, okay, let me write this. This is the singer, place, listener, then impact on the listener, okay. First कौन लिखिला, solitary reaper. Here Scottish Highland, the place is Scottish Highland and the listener is the poet himself. And what is the impact on the listener? Holds him spellbound, ताको अभिभूत करि दउछि, holds him spellbound. Okay, so this was the connection.
ये गोटे इनफॉरमेशन लाइकवाइज नाइटिंगेल नाइटिंगेल जो पक्षी गाउची तार प्लेस कोठी ना Arabian sands. And who are the listeners? The tired travelers. Klanta pathiko, tired travelers. So impact on the listener. Their hearts are filled with joy. Are filled with joy. से जो क्लांत पथिक मानकर हृदय गुड़िक कौन होची ना टिके आनंद रे भरी जाउची नाइटिंगेल पक्षीर कंठस्वर बा तार गायन सुनिला परे लाइकवाइज कुको 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 इस प्लेस इज Hebrides. The listener are people and breaks the silence. You know, important impact of the listener. It breaks the silence. कौन करुची ना the cuckoo bird sings and you know it breaks the silence of the Hebrides. गोटे वर्ड गोटे सेंटेंस हमें देखिले you know the most remote, you know, breaking the silence of the seas among the farthest Hebrides. तो अभी से कौन कहूँ देखो नाउ राइट वन पैराग्राफ फॉर ईच सब टेबल प्रत्येक या यही सब टेबल पर सी गोटे पैराग्राफ लिखी खाली आम या आउ या लिखा सो राइट वन paragraph for each of the sub table using the facts or information available here under. One is done for you. देखो फर्स्ट को केमती लिखी ना the solitary reaper was singing a melodious song as reaped crops in the deep valley of Scottish Highlands. The poet chanced to see and hear her. The tone and the tune enchanted the poet. It held him mesmerized and spellbound. The poet stood motionless and still as he listened to the song. ओके यार माने समस्ते बुझी पारुथबो तो वर्तमान आमे एई सब टेबल रो आकु मध्य हमकु एक्सप्लेन करबा पई पड़िबो जे देखो दिस वन नाइटिंगेल अरेबियन सैंड्स tired travelers and their hearts are filled with joy. ए चारिटा कथा को नहीं करी हमको सेंटेंस बनाया पई पड़िबो लाइक नाइटिंगेल सिंग्स प्लीजेंट टू द टायर्ड ट्रैवलर्स इन द ओएसिस ऑफ अरेबियन सैंड्स. The hearts of the tired travelers get filled with joy to hear the nightingale's entertaining notes, whereas the reaper's melancholy strain was sweeter than the nightingale's singing. Okay, the second one, cuckoo, Hebrides, people, and impact on the listener is it breaks the silence. So the poet found the reaper's song more melodious than cuckoo bird, whose amusing and thrilling voice breaks the silence of the sea among the most remote groups of islands that lies to the northwest of Scotland. जहाँ बहिरे आमरो Hebrides रो मीनिंग्स लिखी देखो आउ थरे the poet found the reapers शस्य कटाली रो संगीत को the poet found the reaper's song more melodious than the cuckoo bird, whose amusing and thrilling voice breaks the silence of the sea among the most remote group of islands that lies to the northwest of Scotland. ओके सो देखो ये जो सेंटेंसेस गुड़ाक आम जमी या एक्सप्लेन कले आकु एक्सप्लेन कले सो ट्राई टू राइट बाय योर ओन से किछि किछि काम तुमको दि जाउछि यू नो सेंटेंस मेकिंग जितेबाला भी मु इंग्लिश रो बेसिक फंडामेंटल क्लास रे भी सही कथा गुड़ाक कही आम बहुत कथा जानू
ताकू जदि आम 1 लाइन 2 लाइन रे जदि एक्सप्रेस न करि परिबा देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट स्टडी तेणु अति सिंपल भाषा हो पछे बट यू हैव टू कनेक्ट ऑल दिस ऑब्जेक्ट्स तेणु आपको नहीं निज भाषा रे आपको लिखा चेष्टा कर एंड यू विल बी सरप्राइज्ड एनफ और दिस इज वेरी नेचुरल थिंग whenever you write every time your sentence will be different than the previous one आम ये कथा को जिते बड़े भी लिखा लिटरेचर बा साहित्य हूँ एमती गोटे विषय ताकू घोषाटा ठीक नुहे जिते थर तुम ताकू लिखिले भी से प्रत्येक थर से न्यू वर्डिंग्स न्यू फ्रेजेस एंड न्यू सेंटेंस फॉर्मेशन हम तेणु सब बड़े यहाँ चेष्टा कर एटलिस्ट यू मे नॉट राइट अ लॉन्ग एसे लंबा एसे हुए तो समस्ते लिखिपारे किंतु सरल भाषा हो पछे ट्राई टू राइट बाय योर ओन बिकॉज इन द एग्जाम यू हैव टू राइट एंड इफ यू चैंट और इफ यू मकअप द आंसर्स देन एवरीवन्स आंसर विल बी सेम समस्त उत्तरटा एका भाया हम इफ ईच वर्डिंग ईच फ्रेज जदि समस्त ईच वर्डिंग और फ्रेज जदि सामान हम ताले तुम लेखारे तुम आंसर किसी भिन्नता बा डिफरेंस रहिबो नाही सो ट्राई टू राइट फ्रॉम योर ओन एबे देखो 3 नंबर क्वेश्चन इमेजिन दैट यू आर द पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ जस्ट आफ्टर हियरिंग द सॉलिटरी रीपर यू विल कंटिन्यू ऑन योर वॉक and reach home. Try to describe your experience to your younger brother what you saw and felt. बर्तमान तुम्हें निजे अनुभव करो जे तुम्हें होच सही कवि महान कवि विलियम वर्ड्सवर्थ आउ तुम्हें गोटे डीप वैली ऑफ स्कॉटलैंड हाईलैंड्स सही कवि जगार तुम्हें अच्छ कवि जो स्कॉटलैंड पार्वत्य उपत्यका अंचल रे थिले एवं सेठी तुम से तरुणी को सही तरुणी शस्य कोटाली को देखिबार आ शुणिबार सुजोग मध्य पाइच सो द टोन एंड द ट्यून एनचांटेड द पोएट इट हेल्ड हिम ओ सॉरी हाँ यू विल कंटिन्यू ऑन योर वर्क एंड रीच होम ट्राई टू डिस्क्राइब तेणु 3 नंबर क्वेश्चन कहुच्छे धरी नियो तुम्हें होछ सही कवि विलियम वर्ड्सवर्थ तुम्हें सेमती तांको जगार अच्छ सही सॉलिटरी रिपर गीत को तुम शुणीच तापर तुम चली चली तुम तुम घर पर्यंत आसीच तुम सान भाई को तुम एक कथा वर्णना करुच जो अनुभूति तुम जो संगीत को शुणिल तुमको केमी लगे से अनुभूतिटा को वर्णना करने सो एगेन देख पिले ये लाइक टोटल पोएम को तुमको टे डिस्क्राइब करार अच्छी जहाँ जहाँ भी तुम व्हाट एवर यू हैव कम थ्रू व्हाट एवर यू हैव फेल्ट द सीनिक व्यू whatever the poet has described everything try to write your own words so just I'll give you an example एटी तुम भाई को कहूच तुम सान भाई को तुम कहूच योर यंगर ब्रदर सो एमती लिखिपर I observed a Scottish girl who lives in the mountain region working while I was passing through the highlands of Scotland. I saw the girl reaping and singing alone in the field. I stopped there and listened to her for a while. Moreover, I enjoyed her song. खाली सेठी ताकू सुनी लेनी बरम ता संगीत को उपभोग कली. The entire valley was overflooded with her amusing voice. तार सुमधुर तार विस्मित कला भली भॉइस रे संपूर्ण उपत्यका जेमिति उछली पडुथला. Her thrilling voice reminded me of nightingale and cuckoo bird. मते कोइलीर कंठस्वर आ नाइटिंगेल पक्षीर कंठस्वर मते मन पकईदेला झीटीर कंठस्वर. I was unable to understand her words, but I just could feel that it was a sad song or as if it was about the painful old memory, or it could have been about any battle in the past. Exactly whatever the poet has described, I have written. Above all of my imaginations, her voice had no ending, since I kept her each word in my heart. I listened her and became a part of her emotion and left the valley, but her singing will remain with me forever.
ता संगीतर मु जमिति निजे गोटे अंश हो गली हाँ बट हर सिंगिंग विल रिमेन विथ मी फॉर एवर तो एतिकी आमे डिस्क्राइब करि पारि बा now see the fourth one is the solitary reaper is a superb panorama of events that slowly and silently glides one to the other. Given below a glimpse of the poet's lofty thoughts occurring in the poem, but they miss their sequence. Can you reorder them as they occur in the poem? Write A, B, C, D, E in the boxes to show the order. Okay. ये जो घटना बड़ी गुड़ा को से असजड़ा है कि अच्छी you know so we need to reorder the events in the proper manner or as they occur in the poem. First देखो लिखी the poet's guess is that the solitary reaper song contains a theme of sorrow, loss or pain. Second, touching tone and melody of the song holds the poet mesmerized and spellbound. Poet walks up the hill carrying the maiden song in his heart and head. The fourth beat, the young farm worker sings to herself as she is reaping the corn. And the fifth one, Wordsworth compares the girl's song with the songs of the nightingale and the cuckoo. So, आमे कविता को ओडिया भावार्थ बा ओडिया सारांश भी तार बुझीचे तेणु देख प्रथमे कौन होउची पिले प्रथमे जेमती कि आमर लेखा हेछि as you see you know the poet has written the first stanza of the poem. What was that? Behold her single in the field, yon solitary highland lash, reaping and singing by herself, stop here or gently pass. तेणु प्रथमे से झीटी को अवलोकन करुछंती अनुध्यान करुछंती बा देखुछंती हाँ कौन से एकाकी शस्य काटुथिबार तेणु फर्स्ट पॉइंट आसिला द यंग फार्मर farm worker sings to herself as she is reaping the corn. The first one is the young farm worker sings to herself as she is reaping the corn. Then next action is Wordsworth compares the girl's song with the songs of the nightingale and the cuckoo. कारण प्रथम से देखुछंती शस्य काटुथिबार आउ तापर ता संगीत तांकु एते मधुर एते मेलोडियस लागिछि जे से नाइटिंगेल आ कुकू बर्ड सहित तार संगीत को तुलना करिछंती. सो द नेक्स्ट इवेंट इज वर्ड्सवर्थ कंपेयर्स the girl's song okay with the song of nightingale and cuckoo bird. Then what is the next? The poet's guess is that the solitary reaper song contains a theme of sorrow, loss or pain. You know आम कवितार यही जिनसा भी अच्छी से अनुमान करिसेंती हुए तो एथिरे कोनोसी प्राकृतिक दुर्विपाक कोनोसी क्षयक्षति बा कोनोसी युद्ध रो दुखद परिणाम को नहीं झीटीर कथावस्तु आगेइछि. तेणु द थर्ड वन इज द पोएट्स गेस इज दैट the solitary reaper's song contains a theme of sorrow, loss or pain. Then the fourth beat should be touching tone and melody of the song holds the poet mesmerized and spellbound. Touching tone and melody of the song holds the poet mesmerized and spellbound.
And the last one should be poet walks up the hill. So finally, after listening to the maiden to the highland lass, the poet walked up to the hill. So the poet walks up the hill. Poet, the fifth one is poet walks up the hill, carrying the maiden's song in his heart and head. Mono au mundo. ତାଙ୍କ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଝିଅଟିର ସଙ୍ଗୀତ ଏତେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି. So poet walks up the hill carrying the maiden song in his heart and head. Then the last question of the solitary reaper, the fifth one is given below a description similar to your experience, but some words or phrases are missing in it. Complete the description using appropriate words, phrases or phrases from the help box. तो गोटे हेल्प बॉक्स देछि जो थरे सब फ्रेजेस अछि. Beauty, a nightingale, a cuckoo, the song, girl's song, plaintive tone of the hill in the valley. By her singing, a beautiful voice, young farm worker carrying the memories, singing to herself, stopped and listened. Feel the whole valley, understand the words and touched me greatly. तो ए फ्रेजेस गुड़ाक बर्तमान गोटे पैराग्राफ अच्छी सिमिलर टू योर एक्सपीरियंस ता भितर आमको यहाँ फिलअप करने को पड़ो. सो द फर्स्ट वन इज आई एम राइटिंग जस्ट नाउ आई वाज वॉकिंग इन द वैली. जस्ट नाउ बर्तमान कौन कर आई वाज वॉकिंग यही किसी समय तले कौन करूँ ना मु भैले दे गति करूली. सो जस्ट नाउ आई वाज वॉकिंग. सो फर्स्ट वन इज इन द वैली. I saw a dash. It should be young farm worker. So the second paragraph or the second fill in the blanks is young farm worker in the field. She was dashed to dash as she worked. So she was singing to herself. Singing to herself. The fourth one should be by her singing. By her singing. कहीं की देखो फोर्थ रा लिखी ना. I was so affected dash that I dash. So I was so affected by her singing that I stopped and listened. That I stopped and listened. Okay. The sixth one, she had a beautiful voice. She had a beautiful voice which seemed to fill the whole valley. The seventh one, fill the whole valley. The eighth one, dash was a sad one. The eighth one was the song. The song was a sad one that I could not dash. I could not understand the words. I could not understand the words. But its dash and melancholy sound dash and its dash remained me the song of dash and dash. Many blanks are there, but its beauty, the 10th one is beauty, but its beauty and melancholy sound tossed me greatly. The 11th one is tossed me greatly. Tossed me greatly, and its dash reminded me, and its plaintive tone, dukhatmaka swara,
plaintive tone. The 12th one is plaintive tone. Reminded me of the song of a nightingale, and the 4th one is a cuckoo, a cuckoo. After some time I walked up the hill. I walked up the hill as the poet did, carrying the memory of the young girls song with me. So the 6th one is carrying the memory of the young of the young girls song with me. So आउ थरे पले मु पढ़ी दउछि याकू देखि नियो थरे. Just now I was walking in the valley. I saw a young farm worker in the field. She was singing to herself as she walked. I was so affected by her singing that I stopped and listened. She had a beautiful voice which seemed to fill the whole valley. The song was a sad one and I couldn't understand the words, but its beauty and melancholy sound touched me greatly, and its plaintive tone reminded me of the song of a nightingale and a cuckoo. After some time, I walked up the hill carrying the memory of the young girl's song with me. Okay, so এটা কোন থিলা? Given below a description similar to your experience. এই কবিতাକୁ পঢ়িକି ଆମେ जो अनुभूति पाइले, जो सब घटनार क्रम से लिखिछंती, सेही क्रमरे एटा लेखा जाइथिला. So help box रू जो 17 words are there or phrases are there, ताको आमे एमती correct form रे सजेई परिबा. So this was all about your poem Solitary Reaper.